So this is my last attempt for SSB and I want your mentorship. Now this is not the first time I get such a call, and it is definitely true that many of the candidates who have the experience of facing SSB, particularly the stage 2, they find themselves somewhere tied in some knots के एक ढर्रे पे वो चल रहे होते हैं और वहाँ पे उनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है जो कि नहीं हो पा रहा है हमसे, and now what to do. So I have seen among a lot of candidates that it is their area of focus perhaps is something that requires a change of direction. So we will talk in this episode of SSB के मसले on this particular aspect. So हमने पिछली बार बात की थी SSB के मसले की एक एपिसोड में, जहाँ पे we talked about repeaters का दर्द, right? There I had covered कि SSB का जो जर्नी होती है रिपीटर्स की, और उसमें क्या मेन मुद्दे होते हैं. There are 4 points I had talked about. The one is that it is a first attempt is a golden attempt, right? One may make the most of it. The second point I talked about was the need for preparation. The third was listening to the briefing by the assessors very, very attentively. And last but not the least, need to be yourself. Now this is something which I have already covered, and I'll share the link. You may go through this. Now आज हम जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, it is about the kind of focus area जो कई कैंडिडेट्स को शायद इसका एहसास नहीं होता है कि हम गलत जगह पे शायद फोकस कर रहे हैं या उतना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं जितना वहाँ पे लगना चाहिए. हमारा शायद एफर्ट और ध्यान जो है, मेहनत जो है, वो पूरी जा रही है किसी एक गलत डायरेक्शन में, राइट, और नॉट अ डिज़ायर्ड डायरेक्शन. तो मैं यहाँ पे एक एनालॉजी देना चाहता हूँ. राइफल शूटिंग आप लोग यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ. तो राइफल शूटिंग में क्या होता है कि आपको पहले एक ग्रुपिंग कराई जाती है, राइट, वेर यू टेक एन एम ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द टारगेट, राइट, और उसी एम को आप लेके आप बर्स्ट ऑफ फायर करते हो अलग अलग, और तब आपको पता लगता है कि आपका जो शॉट्स जा रही हैं, जो बुलेट्स हिट कर रही हैं टारगेट पे, वो कहाँ पे हिट कर रही हैं. आपने एम लिया था एकदम क्रॉस पे, लेकिन वो लेट अस से क्रॉस से आपका बुल साइज जिसे हम बोलते हैं, वहाँ से 30 डिग्रीज के एंगल पे करीब 3-4 इंच ऊपर जाके वो लग रही हैं सारी की सारी बुलेट्स. सो आपका निशाना अच्छा है, लेकिन जो राइफ़ल की बनावट है वो ऐसी है कि उसकी वजह से वो गोलियां जो हैं एक डिफरेंट लग रही हैं. नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये राइफ़ल टू राइफ़ल ये डिफ़र करता है. सो लाइक वाइज आई वुड से दैट पर्सन टू पर्सन, कैंडिडेट टू कैंडिडेट, ये चीज़ डिफ़र करती है कि वो कहाँ पे अपना एफर्ट लगा रहा है. सो आपको ये देखना है कि आपको एफर्ट कहाँ लगाना है. एफर्ट तो आप लगा रहे हो, लेकिन वो जो उसका नतीजा जो है वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है. सो आई feel very strongly that candidates ought to be knowing which is the area they need to put maximum focus on. तो आपको एक अपना एफर्ट है उसका डायरेक्शन रीएडजस्ट करना है, राइट. दिस आई एम प्रिज्यूमिंग दैट कि आप एफर्ट लगा रहे हो. और काफ़ी रिपीटर्स को मैंने देखा है, येस, दे वेरी सिंसियर, वेरी हार्ड वर्किंग, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन होता क्या है कि वो एक मशीन की तरह या मैकेनिकली किसी चीज़ को फिर बार बार करते हैं. लाइक आई कीप सेइंग, गिविंग दिस एग्जांपल ऑफ सम कैंडिडेट्स कि हमने इतने 100 जो हमने TAT प्रैक्टिस कर ली है, 500,000 हमने SRT प्रैक्टिस कर ली है, एंड थिंग्स लाइक दैट. So now this is something which is not to be done mechanically. आपको conscious होके देखना पड़ेगा कि कहाँ आपका effort जा रहा है. One of the candidates recently I was guiding, his knowledge level was good, everything was fine, but what was happening is that he was not getting into the root cause of the problems. He knows the issues, but what is the reason for this? Let us say we talk about current affairs.
Now, it is not so important to know what is happening, right? Current affairs कितना आप जानते हो, it is not so important. What is important is कि जो चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है और उसके कारण क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, solutions क्या हो सकती हैं उसकी. Now, this is something that we are very keen to find out. So it's not, it's a misnomer to say और टू फील कि आपको करंट अफेयर्स सब कुछ मालूम होना चाहिए ना, आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. हालांकि यस, आपका अगर अवेयरनेस लेवल अच्छा है, इट इज़ वेरी नाइस. व्हाट इज़ ऑल्सो बीइंग सीन हियर इज़ योर एबिलिटी टू एनालाइज थिंग्स, योर एबिलिटी टू रीजन आउट थिंग्स, योर एबिलिटी टू सजेस्ट सॉल्यूशंस. नो, ये भी चीज़ें हम आपके करंट अफेयर्स के थ्रू ही हम जानना चाहते हैं. कई बार इन चीज़ों का हमें पता चल जाता है आपके इन वेरियस CIQs दैट वी टॉक अबाउट. वी ऑल्सो गेट टू नो हाउ रैशनल यू आर, हाउ मच रीजनिंग डू यू हैव, राइट, एंड कैन यू फाइंड सॉल्यूशंस टू सिंपल प्रॉब्लम्स. नाउ दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस, जो चीज़ हम देखना चाहते हैं. इस चीज़ को देखते हुए आई वुड से दैट वन नीड्स टू be clear about where he has to put more effort in. Considering this felt need, I think particularly for the repeaters, it is important that after having known the entire sequence or the process, it is important कि आपको ये पता लगे कि आपको कहाँ काम करना है. For this, of course, you need to have some kind of a personalized mentorship or guidance. बिकॉज अदरवाइज आपको लगेगा आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो. ऑन पीयर ग्रुप में आप सजेशंस होते हैं, नो दे मे नॉट एग्जैक्टली बी फॉर यू, राइट, दे मे बी इन जनरल फॉर द ग्रुप. सो आपको ये तय करना है कि आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कहाँ पे आपको मेहनत करने की आवश्यकता है. सो दैट डायरेक्शन, द फोकस, I think that is something which you need to worried about. So for all the repeaters, I particularly feel that there is a need to see your grouping, right? वो कहाँ जा रही है, कौन से डायरेक्शन में आपका एफर्ट जा रहा है और उसको किस तरह से आप रीएडजस्ट कर सकते हो. I am going to cover a course, maybe intend to do a mentorship course for the repeaters, especially the repeaters, because see, repeaters का क्या एक uniqueness है कि yes, they are keen, they are determined to do to get into the services. मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, उनको प्रोसीजर पता है, उनको काफ़ी चीज़ें उनकी सही हैं, लेकिन एक सही गाइडेंस शायद नहीं मिल पा रही है. एवरीवन हैज़ परहैप्स टेकन सम काइंड ऑफ अ कोचिंग. एक पूरा SSB का कोर्स आपने किया हुआ है यूट्यूब में, और अदरवाइज इन द पीयर ग्रुप ऑल्सो यू हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट. लेकिन आपका जितना जहाँ पे फोकस होना चाहिए, शायद अगर आपको कोई assessor से ऐसे जानकार से आपको सलाह मिल पाए, so you will do much better. And let me tell you very frankly, the maximum number of success that my students have had is those who are repeaters. Not to say that a fresher cannot succeed, but like I said, the trend, if you see in the SSB, practically every batch, it is more number of repeaters who are getting recommended than the freshers. If you need guidance, I look forward to taking you up under my wings. So guys, having discussed the problems that the repeaters normally face, I am going to start a course in which I will be specifically focusing on the repeaters. You can say an iconic mentorship program. Right? Very shortly, I'll be announcing the dates. And those of you who are keen, especially repeaters, those who have been perhaps not finding out ki exactly kahan pe gadbad ho rahi hai, so we'll try and address those issues. So hoping to see you there. Jai Hind.